Hi, myself Rajshree Mhatre from Sage Wilfred College of Arts, Commerce, Science. I'm from CSIT department. Subject name is Software Project Management, Lecture 4. Today we will discuss about the business case. Flexibility studies can also act as a business case, provides a justification for starting the project. Should show that the benefits of the project will exceed development, implementation, and optional cost. Need to take the account of business risk. See, now what happens here in business case, we captures the reasoning for initiating a project or a task. It is often presented in a well-structured written document, but may also become in the form of a short verbal agreement or the presentation. The logic of the business case is that whenever resources such as money or any effort or are consumed or used, they should be in the support of a specific business need. Uh, for an example, a support or a software upgraded might improve the system performance, but the business case is better performed would improve the customer satisfaction, required less task processing time or reduce system maintenance cost. In short हम बोल सकते हैं कि बिजनेस केस उसी के लिए हेल्प हो जाता है हमें कि rather than मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन हेल्प करता है कि सिस्टम का परफॉर्मेंस अच्छा हो, लेकिन उसका सबसे इम्पोर्टेंट हमें क्या रीजन होना चाहिए कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसा है उसका. So a compelling business case adequately captures both the quantitably and the non-quantitably characters of a prospered object. So there are some 6 steps here. Well, 6 steps of building a bulletproof business case for project management or software project management. First case is state challenge. This blue one shows first state. Now what it is, the state business challenge is you're looking to solve the goals to you are trying to achieve. Now your state challenges means हम यहाँ पे प्लानिंग करेंगे जो भी कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स है या जो भी कस्टमर के हमारे पास से गोल्स है वो हम उसको कैप्चर कर सकते हैं, वो मीट कर सके. वी हैव टू अचीव द गोल्स ऑफ द कस्टमर्स. ओके, सेकंड वन इज दिस प्रोवाइड सॉल्यूशन, ऑनलाइन प्लान for how you will use PM, that is project management software, to solve your problem or achieve your goal. See, whenever any problem rises or any risk comes, we have to solve online. अगर हम कस्टमर को प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं या उसका प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि if the software is already delivered तो उसको ऑनलाइन हम उसको रिसॉल्व कैसे कर सकते हैं, how we can achieve the goals of the customer. Next is outline cost. This is outline cost. We can see हम budget भी बोल सकते हैं. List of cost and related achievements, considerations of purchasing PM software. See, when they are going to purchase this softwares or cost, it should be in their budget. It won't go over budget because he had paid something and then it is getting over budget, which won't be analyzed by a person. Next it is fourth one, outline benefits. This is the benefits and related business gain that PM software can provide. PM is project management software can provide. Here, after completing all the procedure, what are the benefits we are going to have here? Next one is provide timeline. Outline the estimated time you have spent to evaluate and implement a new tool. See, when you are providing a new tool, it is very important that it should be estimated or it should be so much flexible that any person can use it by a new tool, and it should be completed in a time also. जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो टाइम से पहले या टाइम तक खत्म होना चाहिए. अगर वो टाइम से ज्यादा हो गया या उस टाइम से ज्यादा बढ़ गया तो बाद में कॉस्ट जस्टिफिकेशन हो जाएगा, बिकॉज अगर टाइम ज्यादा है तो मैन पावर ज्यादा लगेगा, काम ज्यादा लगेगा, देन वी हैव टू पे फॉर इट अगेन. द कस्टमर वोंट बी हैप्पी अगर उसको ठीक से डिलीवर या टाइम से डिलीवर नहीं हुआ. तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी उस वक्त मैटर करता है. नेक्स्ट वन इज रिवेंज चेंज मैनेजमेंट. लीस्ट चेंज मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस
you are following to entire build in and the outer eruption, then whatever, मतलब हम बोल सकते हैं इसमें जो भी हमारे बाहर के कलीग्स है, जो आउटर कलीग्स है, उसके हम कैसे बेस्ट मैनेज कर सकते हैं, उनको कैसे अच्छे से होल्ड डाउन करके रख सकते हैं, इज नोज अबाउट ऑल अबाउट रिवेंज चेंज मैनेजमेंट. Business cases matlab it kind of range from comprehensive of highly structured. See, when we are required for a formal project methodologies or informal in brief, information included for the formal business case could be a best background for the project. The expectation business benefits, the optional considerations, the expect cost of project, the gap analysis, and the risk and accepted risks. Consideration should be also be given to the option of doing nothing, including the cost and the risks of inactive. From this information, we justify how the project should be delivered. See, content of the business case. Content of the business case. See, introduction and background. Describe a problem to the solved or an opportunity to be explored. This will help us. See, जो भी see why we are writing business case, मतलब पहले हमने last lecture में भी देखा था कि जो मैंने एग्जांपल दिया था वेबिनार का, जो एग्जांपल दिया था वेबिनार का, the test case will also will hold the information that किसने किया, किस लोगों ने किया, क्या टाइम लिमिट था, किन लोगों ने हैंडल किया, all the background and introduction part of business case. See, the proposed project, a brief outline of a project scope, the market, the project could be developed a new product. Example, a new program game हम ले सकते हैं. The likely demand for the product would need as an assistant. अभी recently हम जो PUBG में ज़्यादा interested थे, the people who are very fond of PUBGs and all, वो यहाँ पे जो मतलब जो मार्केट में ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं उसको और ही इम्प्रेस, ऑलरेडी प्रोपोज्ड गेम है, उससे और इन्हांसमेंट क्या हम दे सकते हैं. तो उसको कोई कंप्यूटर गेम या रिसेंटली हम पबजी बोल सकते हैं, एक एग्जांपल इज बेस्ट रियल टाइम एग्जांपल है कि नाउ पीपल हैव मेनी क्रेज, स्पेशली बॉयज हैव वेरी क्रेज ऑफ पबजीज. Okay, organizational and operational infrastructures, how the organization would need to change. This would be important where the new information system application would be introduced. See, whenever a new application system is introduced, it is very fond of that how it is going to be a change, what new changes are there. It may be an operational or organizational infrastructure change. Okay, benefit this should be expense in financial terms where possible. In the end, it would be up to the client to access this as they are going to pay for the project. Whenever we are using these benefits, we should understand that client needs a benefit from this project. अगर उसको कोई benefit है ही नहीं इस project से, he won't take it, he won't be happy also. और फिर भूल जाना, नेक्स्ट टाइम कोई प्रोजेक्ट उसके तरफ से नहीं मिलने वाला हमारे ऑर्गेनाइजेशन को. ओके, सो इफ ही इज नॉट हैप्पी, इफ ही इज नॉट गेटिंग एनी फाइनेंशियल बेनिफिट्स, तो कुछ इम्पोर्टेंस थोड़ा कम हो जाता है उस प्रोजेक्ट को लेकर, और वो हमें पैसे पे कर रहा है. तो ये भी एक अलग ये है कि अगर ही इज पेइंग अप फॉर अ प्रोजेक्ट, तो उसका प्रोजेक्ट अच्छे से क्वालिटी क्वांटिटी वाइज ठीक से चलना भी चाहिए. इट शुड बी लॉन्ग लास्टिंग, flexible, any person can use it, then it should be manageable, maintenance, low maintenance hona chahiye uska, and then won't raise any problem every time to execute it. Next, see the outline implementation plan, how the project is going to be implemented. This should consider the descriptions to an organization that the project might cause. See, when the outline implementation is planned, we should understand how it should be implemented. This should be considered the descriptions of an organization of a project when we are going to use it. या जब भी हम ये project implement करेंगे, तो उसको कैसे implement करना चाहिए कि उसका organization का repute भी अच्छा रहे और वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा demand में रहे. The best one is ज़्यादा से ज़्यादा demand में रहे वो project. Next one is cost. The implementation plan will supply information to establish this budget. Now what happens, अगर कोई implementation plan है, it will always help us, मतलब वो help करेगा उसका budget establish करने में अच्छे से. मैंने implement कर लिया कि project ऐसा ऐसा बनना है, तो उसी के हिसाब से मैं ये भी finalize करूंगी इतना budget लगेगा. नए सॉफ्टवेयर, नए
नए टीम मेंबर्स के लिए, टीम मेंबर्स हु आर वेरी एक्सपर्टीज इन दिस प्रोजेक्ट, हु कैन हैंडल वेरी गुडली, तो उनको अमाउंट, उनकी सैलरी, सब कुछ एवरीथिंग, उनका मेंटेनेंस, सब कुछ निकाल के प्रॉपर बजट भी निकलना चाहिए. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एनालिसिस, combines cost and benefits data to establish value of product. See, combine costs and benefit data to establish value of project. बनाने में कुछ अमाउंट लग गया और उसको, उसका बेनिफिट कुछ अमाउंट में आ गया, इन दोनों को मिला के हमें प्रॉफिट ही चाहिए. अगर वो लॉस है तो सॉरी नहीं चाहिए. अगर प्रोजेक्ट बनाने में, फॉर एन एग्जांपल, प्रोजेक्ट बनाने में हमें 10 रुपया लग गया, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, 10 रुपए नहीं लगते बट इट्स एन एग्जांपल. लेकिन 10 रुपया लग गया, उसका बेनिफिट निकाल कर हमें 10 to 5 रुपीज आ गया और एक्स्ट्रा, तो दिस वी आर इन अ प्रॉफिट. लेकिन बनाने में भी उतना टाइम लग रहा है और उसके बेनिफिट्स भी उतना लग रहा है, तो देयर इज नथिंग प्रॉफिट एंड लॉस सिस्टम. देयर इज नथिंग प्रॉफिट एंड लॉस सिस्टम. तो जो भी बेनिफिट है और जो भी उसके कंबाइनिंग कॉस्ट है, मतलब जो भी बनाने में लगने वाला अमाउंट है और उसका बेनिफिट डेटा है, वो ऑलमोस्ट सेम ही होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. See, the concerns of project portfolio management includes evaluating proposal projects, assessing the risks of involved with project, dedicating how to share the resources between projects, taking account of dependency between projects, removing duplication between projects, checking for gaps. I'll tell you what is first project portfolio management. We can see PPM. In PPM is the centralized management of a process, methods, and the technologies used by the project managers and project management offices. See, to analyze and all collectively manages current or proposed project based on the numerous keys of characteristics. Okay. See, what happens when the objectives of PPMs are determined, the optimal resources mixed for delivery and to schedule the activities to best achievement of an organization and the financial goals, while honoring the constraints imposed by customer strategic objectivities, then external real world factors. See what happens, the international standard defines the frameworks for the portfolio management. See what happens when we are going to have this portfolio management, we have think हम ये सोचते हैं कि इसमें क्या क्या यूज होना है, तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट इसमें क्या क्या यूज हो रहा है, तो फिर उसमें मेथड्स यूज होते हैं, मेथोडोलॉजीज बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजीज यूज सकते हैं, और ये कौन यूज करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो यूज है. और क्यों यूज करेंगे, टू एनालाइज एंड कलेक्ट द मैनेज द करंट प्रपोजल्स ऑफ द प्रोजेक्ट. ओके, when in early 20s में क्या होता था, many PPM vendors were realized that project portfolio reporting service only addresses a part of a wider needs in the marketplace. Another more senior audience has emerged, sitting at the management and executive level about detailed work executions and schedule management, who required a greater force on the process improvement and ensuring the visibility of an portfolio in the line with overall strategic objectives. What happens in additional, as a size raise, and as a size, scope, and complexity and the geographical spread of organization, project portfolio continued to grow, and a greater visibility was needed for the project work across the enterprises, line to an improvement of a resources utilizations and capacity plannings. What happens here, जब ये PPM के वेंडर्स को पता चला कि ना, उनको रियलाइज हुआ कि रिपोर्टिंग सर्विस सिर्फ एड्रेसिंग वाइड नहीं है मार्केट प्लेस में, हमें और भी कुछ होना चाहिए. दैट अनदर सीनियर ऑडियंस बोल सकते हैं, मतलब और भी सीनियर जो है ऑडियंस, मतलब मार्केटिंग वैल्यू, मतलब कस्टमर्स ही बोल सकते हैं हम लोग. What they are doing, they are merging and sitting at the management and executive levels, and what they are doing, they are detailing the work. एक अच्छा सा काम करे कि क्या क्या फोकस रखना चाहिए पोर्टफोलियो के हिसाब से, मतलब उसका साइज, उसका स्कोप, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसका ज्योग्राफिकल स्प्रेड अगर अच्छा है और अच्छा जा भी रहा है, तो ग्रेटर विजिबिलिटी होनी चाहिए प्रोजेक्ट को लेकर, उसका एंटरप्राइज ज्यादा होना चाहिए. इट शुड बी इन अ गुड वे. दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द की ऑफ द प्रोजेक्ट. Then what happens afterwards, what is this evaluation and all will have, it will all
help in evaluating all the data from the project. Okay. So this is something that a small diagram we can understand. uh, Pipeline management, resource distribution, change management, financial administration, risk management, operational efficiency. See, PPM software provides an organization with the skill to identify which projects are most critical to their company objectives and helps to automate the processes, streamlining the planning, managing, and the delivery of the each project. See, what happens in optimizations every time? The key result of PPM is to decide which project to fund in a optimal manner. A project portfolio optimization is an effort to make a best decision possible under this condition. What happens? जब भी कोई प्रोजेक्ट हमें मिलता है तो हम उसको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, एंड वी आर गोइंग टू डिसाइड ऑन इट कि पाइपलाइन मैनेजमेंट क्या होता है और कौन कैसे करेगा, रिसोर्सेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे team persons में. See, every person is going to be work in a different manner to complete that project. Okay, with the different ideologies, different methodologies, different methods, different frameworks. तो हर एक प्रोजेक्ट का फ्रेमवर्क या मेथडोलॉजीज अलग होता है, अलग तरीके से होता है, तो उसके रिसोर्सेज भी डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, अलग अलग एक के पास रखकर नहीं हो सकता. मैनेजमेंट चेंज होना चाहिए मतलब जो है मैनेजमेंट चेंज नहीं, but if it is not working then we have to change the other in a different way. फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए कि जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे उसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन रहे कि मतलब एक बोलते हैं ना ओवरव्यू रहे कि हम बजट के ऊपर तो नहीं जा रहे, बजट इज वर्किंग प्रॉपरली, मतलब बजट ठीक से जा रहा है कि नहीं. देन वी कैन से रिस्क मैनेजमेंट. व्हाट वी कैन से रिस्क मैनेजमेंट कि जब भी कोई रिस्क एनालाइज हुआ या रिस्क हम बोल सकते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, कोई एरर है या उस इन शॉर्ट मतलब प्रोजेक्ट फेल होने के कोई चांसेस है, तो उसको मैनेज करना सबसे इम्पोर्टेंट है. उसको टेस्टिंग से, उसको एनालिसिस से, उसके अलग डिफरेंट फिर रिसोर्सेज चेंज करके उसका जो भी है उसकी एफिशिएंसी चेंज करके हाउ वी आर गोइंग टू मैनिपुलेट इट एंड वी आर रिड्यूसिंग द रिस्क.